Recommencing our lecture, today we will study about mirror. So far we have discussed about image and types of image. I think you can recapitulate the concept of real and virtual image. Now, before constructing the image formation, before going through the image formation of plane mirror or a spherical mirror, let us discuss what is mirror. How could you define mirror? Listen carefully. A mirror is a piece of transparent glass. Now, a glass is transparent, but a mirror is not a transparent material. It is opaque material. A mirror is a piece of glass having one surface smooth and other surface polished by a shiny material. The shiny material act as a reflector of light. And listen, silver is the best reflector of light, but silver is quite expensive. So, as an opaque coating, basically aluminum foil or alloy of mercury, such as amalgams is used. What is mirror? How could you construct a mirror? Listen, a piece of glass is taken. Let this be a piece of transparent glass, and its one surface is coated by a shiny material, such as amalgams or such as aluminum foil. Now, this structure behaves as a mirror. Its front part. This is the front part, and this will be the rear part or back part. हम मिरर कैसे बनाएंगे? एक ग्लास का स्ट्रक्चर लिया, एक ग्लास लिया, उसके एक सरफेस को यूं ही ओरिजिनली छोड़ दिया जा रहा और दूसरे पार्ट पे एक शाइनी सरफेस का हम क्या कर रहे हैं? कोटिंग कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्टर के तौर पे वर्क करता। जब हम एक ग्लास के एक सरफेस हम शाइनी सरफेस का कोटिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर, वही कंस्ट्रक्शन क्या कहलाता? मिरर। तो मिरर का डेफिनेशन क्या होगा? अ मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास having one surface coated by a shiny material, and such a surface and such an object is called mirror. For image formation, mirror is required. Mirror act as a smooth surface. Regular reflection takes place. An optical appearance of an object is produced. How? We will discuss. But before discussing the image formation, let's come to the type of mirror. There can be two types of mirror. It can be plane mirror. It can be a spherical mirror. And further, the spherical mirror has been subdivided into two mirror: concave mirror and convex mirror. Before discussing a spherical mirror, let us go to plane mirror. What do you mean by plane mirror? Now, a mirror can have a straight polished surface, or a mirror can have a curved surface. This is the basic difference between a plane mirror and a spherical mirror. Now listen, if a mirror have a straight polished surface, if the reflecting surface of mirror is straight, it will be a plane mirror, while if the reflecting surface of a mirror is curved, it will be a spherical mirror. Okay? Now, we will discuss about plane mirror. How could you define plane mirror? What is plane mirror? A mirror having a straight polished surface is called plane mirror. ये straight glass है, M डैश, इसका दो एंड है, इसके एक सरफेस को हम ओरिजिनली छोड़ दे रहे हैं, दूसरे सरफेस पे हम ओपेक कोटिंग कर रहे हैं। ये मिरर है। ये कौन सा मिरर होगा? ये प्लेन मिरर होगा। ये प्लेन मिरर क्यों है? क्योंकि इसका सरफेस क्या है? स्ट्रेट। अगर ये कर्व सरफेस होता, से लाइक दिस, हम इस तरह भी कोट कर सकते थे। ये भी मिरर है, ये भी पीस ऑफ ग्लास है, इसकी एक सरफेस पे हम ऑपिक कोटिंग कर रहे हैं शाइनी मटेरियल का। ये भी मिरर होगा, लेकिन इसका सरफेस क्या है? कर्व। ये स्फेरिकल मिरर होगा, ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा? बोलो। प्लेन मिरर कैन बी इजीली डिफाइंड एज अ मिरर हैविंग स्ट्रेट पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। नाउ वी विल गो टू द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, हाउ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन प्लेन मिरर। द हेडिंग इज इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। Image formation in plane mirror. Now there can be two cases for image formation in plane mirror. Case 1 for a point object, then we will discuss about the image formation for an extended object. Let us go through case first. Let a mirror is taken. Let a plane mirror is taken and let their end point be M and M dash, which is the front part of the mirror. This one, and this is the rear part of the mirror. Always for an image formation, an object is placed in front of the mirror. है ना? Now let a point shape object O is placed in front of the mirror. This is the object. This is the object. The object is point shape. Now what is the prerequisite condition for image formation? Presence of light.
एक डार्क रूम में अगर तुम मिरर के सामने खड़े हो, क्या वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं। इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? अगर वहाँ पे लाइट का सोर्स हो। जब तक, और हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, इमेज का फॉर्मेशन कब होगा? जब एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड लाइट का इंटरसेक्शन होगा तो ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। इन फैक्ट इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट के इंटरसेक्शन से इमेज का फॉर्मेशन होता। तो ये ऑब्जेक्ट है और माना सोर्स ऑफ लाइट भी है। कंसिडर करो सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट इस तरह आ रहा, क्या ये मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा? हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी whenever a ray of light is falling perpendicularly on a surface, return back on its original path। जब ये रे ऑफ लाइट इस मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, इसका रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा? इसका रिफ्लेक्टेड लाइट इसी पास पे क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है। सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट और इस तरह फॉल कर रहा है, क्या ये भी परपेंडिकुलरली है? नहीं, ये मिरर से कुछ और एंगल बना रहा है, ये ऑब्लिकली फॉल कर रहा। तो हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है। ओके, अब इसका रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न होगा, वो नॉर्मल से उतना ही एंगल बना रहा जितना इंसिडेंट है नॉर्मल से बना रहा है ना। तो हम यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह के एंगल आई और एंगल आर क्या है? इक्वल। अब कंसिडर हियर, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट रे and this is the second reflected light ray. They are originally intersecting? No, they are diverging in front of the mirror. क्या यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट रे का? नहीं। क्या यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है? ये लाइट रे ओरिजिनली इसी पाथ पे जा रहा, ये लाइट रे इस तरह बेंड कर जा रहा, तो क्या इन दो रे ऑफ लाइट का ओरिजिनल इंटरसेक्शन हो रहा? एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है क्या? यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हो पाएगा? नहीं। डेफिनेशन बताया गया है, अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो रियल इमेज, अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, वर्चुअली वो अपीयर करता हुआ दिखे, तो उस इमेज को हम कौन सा इमेज बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट के पाथ को पीछे की ओर ट्रेस कर रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड लाइट का पाथ था, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड है, इसके पाथ को हम पीछे की ओर ट्रेस की। क्या दोनों का वर्चुअल इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है? इमेज का फॉर्मेशन किस पॉइंट पे हो रहा? इस पॉइंट पे। ये O क्या है? ऑब्जेक्ट, और I क्या होगा? इमेज। क्या इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये मिरर है, ये O एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट था, सोर्स ऑफ लाइट से एक रे ऑफ लाइट फर्स्ट इंसिडेंट पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा मिरर पे, ये वापस इसी पाथ पे रिटर्न हो रहा। एक दूसरा रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रहा मिरर पे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट अदर देन 90 है, रिफ्लेक्टेड कुछ ना कुछ सेम एंगल बनाता हुआ वापस रिटर्न हो रहा। अब दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट का ओरिजिनल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा, तो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट को जब पीछे की ओर एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो आई पे मीट करता हुआ प्रतीत हो रहा। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा? आई पे। क्या ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आ रहा? ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी जरूरी है, जब ये कंस्ट्रक्शन खुद ब खुद कॉपी में नहीं किया जाएगा ये किसी काम का नहीं। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में, अगर तुम क्वेश्चन को देखो। ओके, now image formation have been expressed. Now we will write down the property of image form. How could you conclude the property of image? Now listen carefully. Where the image is forming, in front of the mirror or behind the mirror? Of course the image is forming behind the mirror. This is the front part of the mirror, this is the back part of the mirror. The image is forming behind the mirror. What is the position of image? The image is formed behind the mirror. Yes or not? Now, what is the nature of image? It is real or virtual? Listen. What is real image? The image formed due to actual intersection of light rays called real image. Or image formed, if the image formed in front of the mirror, the image will be real. What is virtual image? The image formed when two reflected light rays does not meet actually, but they appears to meet behind the mirror. The image will be virtual. Okay now? And of course the virtual image is always formed behind the mirror. यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड लाइट रे का हो रहा है, वर्चुअल इंटरसेक्शन। एक्चुअली तो लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट नहीं कर रहा, ये वर्चुअली मीट कर रहा है। ये इमेज कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल। और सेकंड पॉइंट, इमेज का फॉर्मेशन सामने हो रहा है या पीछे? पीछे की ओर। ये इमेज कौन सा इमेज होगा? वर्चुअल। ये बात समझ में आ रहा ना? ये इमेज वर्चुअल क्यों होगा? इमेज वर्चुअल इसलिए है क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर हो रहा, और ऑफ कोर्स रिफ्लेक्टेड लाइट का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, वो इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत हो रहा। इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता, ये हम स्फेरिकल मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज ही बनेगा, वैसे इमेज को हम इरेक्ट बोलेंगे। यहाँ पे तुम कंसेप्ट इसको वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। इमेज भी क्या हुआ? इरेक्ट। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इमेज यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? पॉइंट सेफ। इमेज भी क्या? पॉइंट सेफ। एनी प्रॉब्लम? नाउ पॉइंट नंबर 3, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो पॉइंट सेफ, द इमेज इज ऑल्सो पॉइंट सेफ. Always in case of plane mirror, always the size of image is same as the size of object. Okay now? And thus the magnification produced by plane mirror is +1.
The plus symbol indicate virtual and direct image, and the magnitude 1 represent the size of image same as the size of object. What is the third property? What could be the third property of image form in plane mirror? The size of image is always at the size of object, and thus the magnification produced by the plane mirror is plus 1. What is the meaning of plus 1? The magnification of plus 1 in plane mirror indicate that the plus sign indicates that the image is virtual and direct. We will discuss it in the sign convention. And 1 indicates that the height of image is same as the height of object. Okay. Come to fourth property. If you compare the distance of object from the mirror and if you compare the distance of image from the mirror, they both will be same. This is the characteristics of image form in plane mirror. In case of plane mirror, always the distance of image form from the mirror is same as the distance of object from the mirror. अगर ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस 5 मीटर है तो इमेज से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी 5 मीटर ही होगा. हमेशा इमेज का डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ही बराबर होगा. जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया मिरर से उतना डिस्टेंस पे इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो हम लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ इमेज formed from the mirror is same as the distance of object from the mirror. These are the important question, particularly for board. This question, property of image formation, have been asked numerous times in the board so far. And last property. Have you heard the name of lateral inversion? Always the image formed in plane mirror undergoes lateral inversion. What is lateral inversion? Left-right inversion. Whenever an object is placed in front of plane mirror, the left side of the object appears in the right side of the image and the right side of the object appears in the left side of image. This phenomena is called lateral inversion. Whenever an object is placed in front of plane mirror, it will undergo lateral inversion. So what are the property of image formed by plane mirror? The image in plane mirror is virtual, erect, it is forming behind the mirror. The size of image is same as the size of object. The distance of image formed from the mirror is same as the distance of object from the mirror, and the image in plane mirror undergoes lateral inversion. Could you define lateral inversion? You can simply say the left-right reversal of image form in case of plane mirror is called lateral inversion, or you can say that whenever an object is placed in front of plane mirror, the left side of the object appears in the right side of the image and the right side of the object appears in the left side of the image. This property is called lateral inversion. Have you concluded? No, any problem? You can just pin it in the group. I will discuss. Now come to case number 2 for an extended object. Now we have to draw the image formation again in plane mirror now for an extended object. Carefully observe. Now let this to be a mirror and M dash B is to end. Let an extended object AB is placed in front of the mirror. Okay. Any problem? A is the top position of the object and B is the bottom position of object. Now listen carefully. You need to listen carefully first of all. Now consider from a source of light, a ray of light is falling on mirror passing through E. This ray of light is falling perpendicularly on the mirror. What will reflected ray? It will return back on the same path. Yes or not? Yes or not? Now you have drawn a path of one reflected ray. Now listen. Suppose another ray of light is falling obliquely on a mirror. You can easily measure the value of angle of incident and you can draw the path of reflected ray. It will return like this. Yes or not? Such that angle I is equal to angle R. Any problem? Again, these two reflected light rays are neither intersecting. Again, from the bottom position, consider a ray of light is falling on the mirror like this. It is falling perpendicularly on the mirror. Again, it will return back on the same path. And a ray of light is falling obliquely again from V. You can draw normal. You can measure angle of incident and you can trace the path of reflected ray such that angle I is equal to angle R. Any problem? Again, two reflected light rays passing through V are not intersecting. क्या रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? अभी नहीं. वर्चुअल इमेज के लिए हम दोनों रे ऑफ लाइट के पाथ को हम पीछे की ओर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. क्या यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है? ये है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे का ये दोनों पाथ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ये दोनों पाथ इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा. ये पॉइंट कौन? इस तरह इमेज का फॉर्मेशन हो रहा. ये पॉइंट क्या? ए डैश और ये पॉइंट क्या? बी डैश.
कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? इमेज। क्या इमेज फॉर्मेशन समझ में आया? फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये मिरर, ये ऑब्जेक्ट, ए टॉप पोजीशन, बी उसका बॉटम पोजीशन, एरिया ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, इसी पाथ पर रिटर्न होगा या नहीं होगा? ये एरिया ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रहा, हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह रिटर्न हो ही जाएगा। फिर से एक एरिया ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली फॉल किया, ये वापस इसी पाथ पर रिटर्न हो रहा, ये एरिया ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल कर रहा, हम नॉर्मल ड्रॉ किए, इस तरह रिटर्न हो रहा। क्या दोनों रिफ्लेक्टेड आई का रियल इंटरसेक्शन हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे कोई रियल इंटरसेक्शन तो हो नहीं रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्चुअल इमेज के दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, जब पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या इस पॉइंट पे मीट करता हुआ दिख रहा? ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये ब्रीफली समझना पड़ेगा और फिर इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तभी तुम इसको बना पाओगे, वरना कोई फायदे का नहीं। ये समझ में आया ना? ये पैटर्न समझ में आना ही चाहिए। ये इमेज फॉर्मेशन है। ओके, now we will note down the property of image form in plane mirror again. Where the image is forming, the property will be same. It is forming behind the mirror. It is virtual and direct. The size of image is same as the size of object. Yes or not? The distance of object from the mirror is same as the distance of image from the mirror. And again, the image form will undergo lateral inversion. Now you can easily conclude the image form in this case is erect. What is the top position of object? A. What is the top position of image? A dash. What is the top position of what is the bottom position of object? B. What is the bottom position of image? B dash. The image is not inverted, it is erect. Always a virtual image is erect. So far you have learned about mirror, you have learned about plane mirror, definition of plane mirror. Then we have discussed the image formation in plane mirror for case first for point object, then for extended object, and lastly we have also noted down the property of image formed by plane mirror. Now the last topic left in the part 1 is the use of plane mirror. What could be the use of plane mirror? Okay, I am not discussing this question. You should note down this answer in your notebook and send it in the group. Now accelerating my concept, now we are moving to a spherical mirror. Today I am not going to discuss all the image formation, just we are going to do the basics, lastly for 5 minutes more. Now listen carefully. Now we will discuss about a spherical mirror. How could you define a spherical mirror? What are a spherical mirror? A mirror having curved polished surface is called a spherical mirror. Listen how a spherical mirror is constructed. A hollow spherical glass is taken, and with the help of glass cutter, two different sections are separated from the original hollow glass like this. Let this be a first surface and this be a second surface. Are they mirror? No. A mirror is a piece of glass, but one surface coated by a shiny material. Now you have two options. Listen. This is the inner part of first surface, and this is the outer part. At the same time, this is the inner part of second surface, and this is the outer part. Yes or not? Now you have two choices available. You can either polish the inner part, or you can either polish the outer part. Yes or not? Consider in first case, the outer part is coated by a shiny material, while in second case, the inner part have been coated by a shiny material. Are these two pieces same? They both are an example of spherical mirror. Now they are mirror because one surface is left and other surface is coated by a shiny material. In both cases, here outer part is left, here inner part is left, here outer part is polished, here inner part is polished. Yes or not? These two are example of a spherical mirror, but there is a difference. What is the difference? Note down. In first case, the inner part is reflecting, the outer part is rough. The inner part will be the front part, the outer part will be the back part. At the same time, in second case, the outer part have been made reflecting, and the inner part is rough. The front part will be the outer part, and the rear part will be the inner part. Listen, this will be a concave mirror. This will be a concave mirror, and this will be a convex mirror. I am defining. Okay. What do you mean by spherical mirror? What is the definition of a spherical mirror? What is the definition of plane mirror? A mirror having a straight polished surface is called plane mirror. What do you mean by spherical mirror? A mirror having curved polished surface is called spherical mirror. इन दो मिरर का सरफेस कर्व है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये प्लेन मिरर नहीं हो सकता. ये कौन सा मिरर होगा? स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का दो क्लासिफिकेशन है, कॉन्केव और फिर कॉन्वेक्स.
How could you define concave mirror? How could you define convex mirror? You are observing. What are concave mirror? A mirror having inner surface reflecting and outer surface rough is called concave mirror. A mirror having outer surface reflecting and inner surface rough is called convex mirror. The inner part of the concave mirror reflecting, the inner part with the front part and the outer part with the rough part in case of concave mirror. At the same time, the outer part will be the front part and inner part with the rough part in case of convex mirror. What will be the front part of a concave mirror? Inner part. And this is a rear part. This is a front part. Could you distinguish between a concave and a convex mirror? What is concave mirror? Yes? No one. A mirror having inner surface reflecting and outer surface rough is called concave mirror, and a mirror having outer surface reflecting inner surface rough is called convex mirror. Now there are 7 definitions related to a spherical mirror. Now we are going through common terms and definition. Now listen, these definitions are: first, aperture of the mirror. Then we will discuss pole. Okay? Then after pole, we will learn center of curvature. After center of curvature, we will learn principal axis. Then we will discuss about radius of curvature. Then we will learn about principal focus, and lastly we will learn about focal length of a spherical mirror. Let us listen now. Consider this to be a spherical piece of glass. Okay? कॉन्केव मिरर बनाना, किस पार्ट को रफ करें, इनर और आउटर? कॉन्केव मिरर आउटर, इसका फ्रंट पार्ट कौन सा हो जाएगा? मिरर। ध्यान से देखो, पहला डेफिनेशन एपर्चर. हाउ कुड डिफाइन एपर्चर ऑफ मिरर? नाउ ऑलवेज अ मिरर हैव टू एंड पॉइंट. लेट m and m dash be the two end point of the mirror. m dash is representing the aperture of the mirror. What is aperture? The length of the refracting surface of the mirror is called aperture. The length of the refracting surface of the mirror is called aperture. m से m dash ही तो refracting surface है mirror का, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? aperture. How could you define aperture? The angular distance between two end point of the mirror is called aperture. The angular distance between two end point. What are the two end point? M and m dash. The angular distance between two end point of the mirror is called aperture. M dash is representing the aperture, or the circumference of the mirror is called aperture. Okay. Now listen, pole. The midpoint of the aperture. The midpoint of the reflecting surface lying on the mirror is called pole. Let this be the center of the mirror. The center of the mirror is called pole, and pole is represented by capital P. Could you define aperture? What is the meaning of aperture? The midpoint of the mirror. The midpoint of what is the aperture? The angular distance between two end point of the mirror is called aperture, or the circumference of the mirror is called aperture, or you can easily write it as the length of the reflecting surface of the mirror is called aperture. Okay. How could you define pole? The center of the mirror is called pole, or the center of the aperture is called pole. The midpoint of the aperture lying on the mirror is called pole. Okay. We have defined aperture, we have defined pole. Now we will discuss center of curvature. Now listen carefully. ये स्फेरिकल पार्ट है मिरर का, लेकिन हम इसको अलग तो किसी न किसी हॉलो स्फीयर से की, और हर स्फीयर का कुछ ना कुछ तो सेंटर होता. उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर से हम मिरर को अलग कर रहे हैं, उसी स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान से सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब, ये मिरर है, ये मिरर को हम इसी स्फीयर से अलग कर रहे हैं. इस स्फीयर का सेंटर है ना, इसी स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. हाउ कैन यू डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज अ पार्ट. मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है, मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये सेंटर किसका है? मिरर का नहीं, मिरर के सेंटर को हम पोल बोलते हैं. ये सेंटर किसका? स्फीयर का. किस स्फीयर का सेंटर? उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर को सेपरेट कर रहे हैं. ओके, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. How could you define center of curvature? The center of the sphere of which mirror is a part is called center of curvature. Now we will define principal axis. Now listen, pole is a point lying on the mirror, and center of curvature is a point lying on a space. Now a straight line can be drawn between 2 points. Consider a line joining pole and center curvature which go to infinity in both direction. It's called principal axis.
This line is representing principal axis. How could you define principal axis? A straight line joining pole and center of curvature which goes to infinity in both direction is called principal axis. एक straight line जो पोल और सेंटर कर्वेचर को ज्वाइन करे और जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड किया गया है दोनों डायरेक्शन में, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. Now you can define center curvature. What is the meaning of center curvature? The center of the sphere of which mirror is a part is called center curvature, and the straight line joining pole and center curvature goes to infinity in both directions called principal axis. Okay. Now we will learn about radius of curvature. What is the meaning of radius of curvature? Now there is a certain distance between pole and center of curvature. The distance between pole and center curvature measured on principal axis is called radius of curvature, and it is represented by capital R. What R represent? The distance between pole and center curvature, it is measured on principal axis. How could you define radius of curvature? The distance between pole and center curvature measured on principal axis is called radius of curvature. It is represented by capital R. Now we will define principal focus. Now focus can be defined different way. Here you can understand that the midpoint of the radius of curvature, lying on principal axis is called focus. The midpoint lying between pole and center curvature is called focus. It is represented by capital F. How could you define focus of a concave mirror or a spherical mirror? The midpoint of the radius of curvature on principal axis is called principal focus. It is represented by capital F. And listen, focal length, it is represented by small f, and the distance between pole and focus is called focal length, represented by small f. Okay, listen, what is aperture? The angular distance between two end point of the mirror is called aperture, or the length of the reflecting surface of the mirror is called aperture. How could you define pole of the mirror? The center of the mirror is called pole, or the midpoint of the aperture lying on the mirror is called pole. How could you define center of curvature? It is the center of the sphere of which mirror is a part. Mirror जिस sphere का part है, उस sphere के center को हम center of curvature बोलेंगे. Principal axis, a straight line joining pole and center of curvature of a spherical mirror which goes to infinity in both directions called principal axis. How could you define radius of curvature? The distance between pole and center of curvature on principal axis is called radius of curvature. It is represented by capital R. How to define principal focus? The midpoint of radius of curvature on principal axis is called principal focus. It is represented by capital F. And how to define focal length? The distance between pole and focus on principal axis is called focal length. It is represented by a small f. Now these all the point will be common, but there is a slightly difference between concave and convex mirror. ये कौन सा mirror है? Concave. Now since this is concave mirror, you are observing that the focus, the center of the curvature, and are these all point a line in front of the mirror. Now the same is not the case with the convex mirror. यहाँ पे एक कॉमन टर्म तुमको समझना पड़ेगा. यहाँ पे फोकस और सेंटर कर्वेचर दोनों मिरर के सामने हैं. यहाँ पे केस हो सकता हम हमेशा ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे रखते, तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते, फोकस पे भी रख सकते, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रख सकते, सेंटर कर्वेचर पे भी रख सकते, बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर भी रख सकते और इन्फिनिटी पे भी रख सकते. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सभी लाइन कॉन्केव मिरर केस में मिरर के सामने लाई करता. लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? लास्ट कॉन्सिडरेशन है, हम ये डिस्कस करते हैं पर खत्म हो जाएगा. कॉन्वेक्स मिरर, ये फिर से स्फेयर का पार्ट है. कॉन्वेक्स बनाना तो हम क्या करेंगे? इनर पार्ट को रफ करेंगे. अब इसका आउटर पार्ट कौन सा पार्ट है? फ्रंट पार्ट. फिर से देखो एम डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपर्चर. द लेंथ, द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इन पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल. द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. ओके ना? द सेम डेफिनेशन. नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, where center curvature will lie? In front of the mirror or behind the mirror? No, it will lie behind the mirror. Listen, this is the spherical piece of glass. Where the center sphere lie? Behind the mirror. सेंटर कर्वेचर तो वही होगा, ग्लास यही था. इस मिरर को हम पीछे की ओर रफ करें तो ये कॉन्वेक्स हो रहा, आउटर पार्ट पे रफ करते तो क्या होता? कॉन्केव होता. तो ये चेंज क्यों आ रहा है? कोटिंग की वजह से. वो एक्सटर्नल फैक्टर है. सेंटर कर्वेचर तो हमेशा क्या होगा? इनसाइड द, हमेशा क्या होगा? इनसाइड द मिरर. ओके, ये सेंटर कर्वेचर है. फिर से हमको क्या डिफाइन करना? प्रिंसिपल एक्सिस. अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर कर्वेचर व्हिच गोस टू इंफिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. द सेम डेफिनेशन. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. देन प्रिंसिपल फोकस, द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. एंड देन फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. द सेम डेफिनेशन, बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस. नाउ दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. यस और नॉट? Now in case of convex mirror, the focus, center curvature lying inside the mirror, not in the front part of the mirror. concave mirror में focus, center curvature सभी mirror के सामने लाई करता था. हम अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख पा रहे थे. लेकिन convex mirror में क्योंकि focus, center curvature inside the mirror लाई करता, यहाँ पे हम focus पे, center curvature पे ऑब्जेक्ट को हम नहीं रख सकते. और इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम दो ही केस देखेंगे, whenever an object is placed in front of convex mirror or at infinity. हम यहाँ पे वीडियो लेक्चर को पॉज कर रहे हैं.
फर्स्ट पार्ट क्योंकि खत्म हो चुका और सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका, तो पेज नंबर 178 है चांद का, और सेकंड पार्ट का जो भी पेज नंबर है उसका एक एक क्वेश्चन हर हाल में बनाना जरूरी है। प्लेन ईयर के न्यूमेरिकल में जो प्रॉब्लम है तुम पूछ सकते हो ग्रुप में, पर बनाना तुम्ही को पड़ेगा, मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर तक खुद ब खुद पेन कॉपी पे नहीं चलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो चाहिए, लिख के पोस्ट करो। थैंक यू, वी विल कंटिन्यू।